Hello guys, this side Dr. Simple Batra from Physiodent Physiotherapy and Wellness Clinic नजफगढ़। आज आपसे हम ये डिस्कस करेंगे कि हमारे पास बहुत सारे सवाल आते हैं कि मैम जब सर्जरी हो जाती है तो उसके बाद हम लोगों को फिज़ियोथेरेपिस्ट के पास जाके ही रिहैब करना चाहिए, या हमारा रिहैब हम किसी भी जिम ट्रेनर या पर्सनल ट्रेनर या किसी भी स्ट्रेंथ ट्रेनर के साथ या योगा ट्रेनर के साथ जाके ज्वाइन कर सकते हैं। तो उस चीज़ का जवाब देने के लिए आई एम हेयर टुडे कि अगर आप सर्जरी के बाद रिहैब के लिए हमारे पास आते हैं तो हम लोग मसल इम्बैलेंस करेक्शन के साथ आपका रिहैब कंप्लीट कराते हैं, और जो जिम ट्रेनर होता है वो सिर्फ़ और सिर्फ आपकी स्ट्रेंथ इम्प्रूव कराने में ही आपकी हेल्प कर पाता है। अब एग्ज़ाम्पल है, जैसे शोल्डर जॉइंट है, शोल्डर जॉइंट में आपकी सर्जरी हुई है सुप्रास्पिनेटस मसल की। वो चाहेगा कि मैं आपकी शोल्डर की रेंज इंक्रीज़ कर सकूं और आपकी स्ट्रेंथ इंक्रीज़ कर सकूं, बट एज अ फिज़ियोथेरेपिस्ट हम असेस करते हैं कि शोल्डर जॉइंट को स्टेबल रखने के लिए विच ऑफ द मसल्स आर रिस्पॉन्सिबल, लाइक सेरेटस एंटीरियर, पेक्टोरालिस माइनर, सबस्कैपुलारिस, इंफ्रास्पिनेटस, टीरिस माइनर, टीरिस मेजर। वी फोकस ऑन ऑल द मसल्स, correct the imbalance between all the muscles and then go ahead. Like if we are finding that subscapularis is very tight or is not able to function properly, then we will release subscapularis first and then we will focus on strengthening. Like strengthening alone and doing range of motion exercises at home will not help your problem to settle. You have to take help of any physiotherapist, of your nearest physiotherapist, for your rehab program after any kind of shoulder surgery or knee surgery, because an expert advice is always needed after a surgery. When you spend a lot of money for surgery, when you are spending thousands or lakhs of your money, hard earned money on surgery, then why to save money from the physiotherapy point of view? You have to spend money for physiotherapy also, because you need good results of your surgery. Surgeon has done his part, now the part is of a physiotherapist in your journey. So you have to respect that. You have to go to a physiotherapist and you need to follow the instructions provided by your physiotherapist, that what you have to do. Many times I see like people come for 10 days or 20 days for rehab program after shoulder muscle surgeries or knee surgeries. It is not guided, it is not advisable. These are the rehab programs. They should be and they must be run for 4 weeks, 6 weeks, 12 weeks, maybe 6 months if needed. The kind of strength you need, the kind of profession in you are, the kind of life you spend, it all depends. Like if you are a normal person, like you have to sit for throughout the day, you can opt for a normal rehab program, like 2 weeks only, it can be enough, and you can do home based program exercises at home. But when you are into sports, but when you are into gym activities, you are a very active person, you need to think on this. You need to learn that I have to perform my all activities of daily living with full strength and with full confidence. So I need to कंटिन्यू दिस प्रोग्राम. मुझे इस प्रोग्राम को कंटिन्यू करना है, लाइक 4 वीक्स, 6 वीक्स, 12 वीक्स, वट एवर द टाइम इज़ नीडेड. So always follow the instructions provided by your physiotherapist and always focus on what they say. Don't underestimate what they are saying. Don't think कि मैं तो खुद ही कर लूँगा या मैं खुद ही कर लूँगी. We are here to guide you what to be done, what not to be done. Don't underestimate and always walk ahead with a good guidance or with expert advice from your physiotherapist. Thank you.